Hello, Assalamu alaikum, and very good evening to all of you. You are watching Shahid Sir's physics class. So today our topic is spherical lenses and associated terms. So as you know, we are done with the refraction of light, laws of the refraction, refractive index, and we have also done the question that is refraction through a glass slab. Now today very important topic, that is spherical lenses and associated term. So stay with your Shahid sir. So first of all हम पहले डिफाइन करेंगे spherical lenses को, और उसके बाद हमारे पास एसोसिएटेड टर्म्स हैं, वो भी हम अलग अलग पढ़ेंगे. 2, 3 या 4 टर्म्स है जो हमने एक्सप्लेन करने हैं. हालांकि वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं मिरर्स में, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मिरर को रिप्लेस करना है लेंस से, एंड नो इशू. Okay, so here we go. So first of all, try to understand what the lens is. यहाँ पे spherical को आप पहले hide this spherical. पहले हम लेंस पे आते हैं. ये लेंस क्या है? लेंस इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल विच इज बाउंड बाई 2 सरफेसेस. और ये जो 2 सरफेसेस है ना बेटा, यही दरअसल क्या है? स्फेरिकल, और जिसकी वजह से इसका नाम स्फेरिकल लेंस पड़ता है. तो ये लेंस जो है, यहाँ पे एक पॉइंट है रिफ्रैक्टिंग मटेरियल. ये मटेरियल जनरली इज ए ग्लास. तो माय डियर, व्हाट इज अ स्फेरिकल लेंस विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम? सो सिंपल सी डेफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं. A spherical lens is a piece of a transparent refracting material generally made up of glass. तो जो refracting material है, it is generally made up of a glass which is bound. It is always bound by 2 surfaces, and these surfaces are generally spherical. So this is the definition of the spherical lens. आप इस ऐसे भी कह सकते हैं, lens is a piece of transparent material which undergo refraction. ये भी आप लिख सकते हैं. Now coming to जो spherical lenses है, ये there are 2 types. आप डायग्राम को देख सकते हैं बेटा. One is convex lens, another is concave lens. तो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे हम आपको बताएंगे. कॉन्वेक्स लेंस में देखो 2 सरफेसेस है. वन इज द पी सरफेस, अनदर इज क्यू सरफेस. अभी मैंने डेफिनेशन में क्या बोला? दे आर बाउंडेड बाय द 2 सरफेसेस. नाउ सी, इनके जो एजेस है दे आर थिन, बट जो मिडल पार्ट है इट इज थिक. तो यही मैंने लिखा. सर कन्वेक्स लेंस इज दैट लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस. वेरी सिंपल. तो चलते हैं बेटा इस वाले पे. तो यहां पे मैंने पी डैश एक सरफेस लिया है और क्यू डैश दूसरा सरफेस लिया है. दे आर बाउंड एंड यू नो दे आर स्फेरिकल. बट हियर इज द केस अपोजिट टू द कॉन्वेक्स. यहां पे मैंने क्या लिखा? थिन एट द सेंटर. तो यहां पे थोड़ा थिन है, लेकिन एजेस पे थोड़ा मोटा है. ओके, थिक एट द एजेस. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो ये है spherical lenses. तो again once more you can have the definition. Spherical lens is a piece of a transparent refracting material which is bound by 2 surfaces. Often both the surfaces are spherical. They are of 2 types. They means lenses are of 2 types. One is convex lens. It is thick in the middle, thin at the edges. And what is concave lens? It is thin at the center and thick at the edges. I hope it is clear. So you can take screenshot of it or you can copy the same. Okay, so I'm going to rub this now. Now my dear, we have got some important associated terms that are very important to remember. तो अगर इनको आप याद नहीं रखोगे ना बेटा, तो कल जाके जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. बिफोर आई टेक द एसोसिएटेड टर्म्स, वन मोर थिंग. अभी मैंने क्या कहा? जो लेंसेज है दे आर ऑफ 2 टाइप्स. What is this? देखो ये वाला थिन एट द एजेस बट थिक एट द सेंटर. तो दिस इज कॉन्वेक्स. सो नाइस ऑफ यू. And what about this? Very good. It is thin in the middle. अब यहां देख सकते हैं, thin in the middle, thick at the edges.
opposite to it, so it is called concave. It's called what? Concave. तो कहते हैं when the rays are parallel to this, when the rays are parallel to this, यानी parallel rays are incident on convex lens, ये एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, like this. So my dear, convex lens is also called as convergent lens. It is also called as convergent lens. तो when rays are incident on this, आपको पता है ये डाइवर्ज होते हैं, तो हमें लगता है कि ये कन्वर्ज हो रहे हैं लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. बट when the lights are incident on what? Parallel rays are incident on concave, they get diverge. Scatter, वो scatter हो जाते हैं like this. So that is why अगर ये यहाँ से rays parallel आ रहे हैं तो एक ही पॉइंट पे क्या कन्वर्ज होते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट लेंस. यहां पे भी रेज आएंगे लेकिन वो डाइवर्ज हो जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट लेंस. डाइवर्जेंट लेंस, यस. Okay, so very simple. Now coming to the next part of the question, that is associated terms. Very simple. Very simple. Okay, first point, I will take generally I will take a convex lens. I will take convex lens. देखिए बेटा, the diameter, very good, the diameter of the convex lens, sir, this is called as aperture. Aperture, I will write it mm dash. So what is it? Aperture. Number second, ये पहले, this is the first associated term. It's called aperture. Okay. The center of the convex lens, this is called optical center. Second term, optical center. Optical center. Very good. And third, the line that passes through this optical center. What is that? You are right, my dear. This is principal axis. Principal axis. Principal axis. Okay. See, if the rays are incident on this, okay, on the other side, they will converge. The point at which they converge, that is called principal focus. That's called what? Principal focus. अगर यहां से आएंगे तो इस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे, तो याद रखना है there are two foci. First principal foci, second principal foci. So principal focus is the another term. Now how many terms you have to remember, my dear? One is the aperture, another is the optical center, another is the principal focus, and most important, you know, that is principal axis. That's principal axis. So these are the associated terms that you have to remember, okay. So after that I am going to show you another. I hope it is clear to you. I hope it is clear to you. If you really like this video, if you really enjoy this, you are really enjoying this video, like it, share it, and don't forget to comment. Comment is very important. Okay. So these are the associated terms that were related to Shabash. Yes. Now, coming to the second part, formation of images by a convex lens. Formation of images by a convex lens. You're right, my dear, we are dealing with the rules.
So what are the different rules that are used for the formation of images by a convex lens? Okay, तो एक सिंपल सी डायग्राम आपको याद रखनी है, हमेशा हमेशा याद रखनी है. तो न्यूमेरिकल्स भी उसी बेस पे आपको समझ आएंगी इफ़ यू रिमेंबर दिस फिगर. ओके, हमें कौन सा लेंस लेना है भाई? कॉन्वेक्स लेंस. तो लाइक हियर, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अपर्चर. गुड. व्हाट इज दिस? सर, ऑप्टिकल सेंटर. व्हाट इज दिस लाइन कार्ड दैट passes through the principal axis? It is principal axis. It is the first focus. It is double of first principal focus. It is second focus. It is double of second focus. Always remember. इसको याद रखना ही रखना है बेटा, इसको याद रखना है. तो लेंस लिया, यहाँ से दो फोकई, यहाँ से दो फोकई. एक्चुअली वन फोकई इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये मैंने डेलिबरेटली आपको नहीं कहा. देखो, अगर हम इस वाले को सर्कल बनाएंगे तो इसका सेंटर ये वाला आएगा, और अगर इसको हम ऐसे करेंगे ना तो इसका ये वाला सेंटर आएगा. ठीक है? ओके ओके ओके. सो नाइस ऑफ यू माय डियर, सो नाइस ऑफ यू. So this is actually the figure that you have to remember. This is very important. Coming to the rule number first. Rule number first, जिस तरह हमने concave mirrors में पढ़ा है, बिल्कुल exactly ऐसे ही लिखना है. The ray of light, very good. किसके parallel है? Parallel to the principal axis. It will pass through the focus. Very nice, very good. This is the first rule. Sir, what is first rule? First rule is if the incident ray is parallel to